So hello everyone, this is your Woman Today's YouTube channel and I'm Krishna over here hosting this interview, and today's our guest is Sangeeta ma'am. So Sangeeta ma'am is actually a multi-talented person. She is actually a media freelancer. She is actually doing media freelancer and she is a English trainer. She is a sports activist and she is also a fitness enthusiast. She is doing all kind of things in a single manner. So I just welcome you, Sangeeta ma'am, to this Women Today's YouTube channel. So hi, how are you, ma'am? Thank you so much, Krishna. Thank you for honoring me with this interview. And yes, I definitely consider it to be my privilege to be here, that is. And thank you once again. Okay, speaking about all these kind of professional careers, so basically you're a media freelancer. As I told you, you're a fitness enthusiast. You are doing an English trainer coach. So how do you just juggle all those kind of works, ma'am? Do you find any kind of difficulties, or do you just do all these kind of activities at total ease, ma'am? So how do you just face this kind of experiences in your daily life, ma'am? Well, Krishna, now that you ask me this question, it does seem, sound tough. But believe me, these things happen by themselves. I mean, when you are really passionate about something, right? I remember I used to, watch news in Doordarshan and listen to it as well on radio. And somehow it always used to enthrall me. And somewhere I think kuch na kuch ek चाह रही होगी, एक wish रही होगी to be a part of that, right? So it was by coincidence that I got into it. I was a newsreader with All India Radio Delhi, and I have been a news presenter with Doordarshan Guwahati here in Assam. So, and along with that, I have always been a very good student. So, academics, I don't think it needs much of effort actually. And I just happened to graduate onto training and coaching and stuff. So things just kept happening by themselves. Not that I really willed it or wished it. So बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगता है, when I my duties. And sports and stuff just happened to come out of nowhere. Actually, my husband is kind of a fitness freak. So he was the one who got me introduced to running and cycling. And so, as I said, these things just kept happening. It was nothing was planned or as such. And I think, given the passion and the interest, I think it comes easy. Yeah, it's difficult to, at times when you are overwhelmed with work, लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये छूट रहा है वो छूट रहा है, but that's okay. I mean, you can't have everything in life, right? तो थोड़ा थोड़ा करके हाँ adjust हो जाता है. So it's a good experience, yeah. So it's like basically out of all these kind of roles, which role do you like the most? Like, if I give you a single role, which role do you think that I fit the most, and I'm very happy to do it daily till my entire life? But you should select only one. I get it. I get it. That's pretty difficult. You've put me in a spot there. But if you really ask me right now, because at different times, I assume different roles assume different importance, so to say. But right now, अगर आप पूछेंगे ना मुझे, तो I'm really really enjoying my work as a trainer, as a coach, क्योंकि इतना ज़्यादा opportunities मिल रहा है, and I'm getting this opportunity to explore different aspects, whether it is government training, corporate training, institutions, and individuals. तो yes, right now trainer and coach का जो role मैं play कर रही हूँ, वो मैं बहुत ज़्यादा enjoy कर रही हूँ, क्योंकि believe me, it is not just about teaching and training or coaching. It is about learning as well. Every time I prepare for a class, I learn something new. और वो जो sense of awe and sense of discovery है ना, I really love that. खुद के लिए भी learn कर रहे हैं, किसी और को भी सिखा रहे हैं. So yes, right now, if you ask me, this is one role that I'm enjoying the most. Again, I wanted to ask you is being a news presenter in Doordarshan in Guwahati. So I always think like how they're able to just speak in a very precise manner. Like you're going live on TV and people are always in a very pressured situation. Like okay, we have to talk correctly in a very precise manner, and also at the same time we should maintain our facial expressions correctly and should do all kind of things
without doing any kind of hassles, without going any kind of hassles, like we are going live on TV. So whether we are going to read a very breaking news or like a simple news, whatever things going on, we should keep our face calm, and also the same time we should keep our English in a very precise manner. So how do you handle all these kind of pressures, ma'am? Please tell us your experience about being working as a live presenter in Doordarshan in Guwahati. Hey, ma'am, just tell your live experience, ma'am. Right. So again, it is, I think it is a mindset, or it is a gradual training process. And I have been very fortunate to get some very good mentors. Even when I was there in Delhi, in All India Radio. So I got I met these incredible people out there. Vijay sir as an editor, and he always, जब नए हमने join किया था ना, the idea was that हमसे तो कोई अच्छा है ही नहीं, we are such good readers, हमारा इतना अच्छा accent है and this and that, but he brought us down to the earth and he said कि कितना improvement है पता है जो आप लोगों को करने हैं, and जो techniques उन्होंने सिखाया था. So it has been a learning process, and to be honest, ये जो learning process है ये कभी खत्म ही नहीं होता है. And I think that is the best part about life as a whole, I would say. कि continuously हम learn करते हैं. Radio was a different experience. Then when I came here to Guwahati and I got an opportunity to join Doordarshan Guwahati, that is DDK Guwahati. तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं था, अभी आपको आपके एक्सप्रेशंस भी संभालने थे, आपका नर्व्स संभालना था कि नो मैटर व्हाट यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी. तो वो सारा चीज ना, ऐसा नहीं है डे वन से सब कुछ आता था. आई मेस्ड अप क्वाइट अ लॉट इन फैक्ट, लेकिन इन एवरी मेस देयर वाज ऑलवेज अ मैसेज. वेरी ऑनेस्टली एवरी मेस केम विद अ मैसेज. तो उससे ना लर्न करके आगे बढ़ना, दैट वाज समथिंग दैट वाज रिवीलिंग फॉर मी. तो हाँ, इट इज एज आई सेड, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को, अपने माइंड सेट को, सारे चीजों को ऑब्जर्व करना अपने आप को मिरर में. जो न्यूज रिकॉर्ड होता है ना, उसके बाद खुद को देखना कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे एक्सप्रेशंस नहीं सही आ रहे हैं. और मेंटोर्स यूज्ड टू पॉइंट इट आउट ना कि प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे जा रहा है, एक्सप्रेशंस कहाँ पे सही नहीं है. तो it was not a one man show. It's the entire team who comes, gives you the feedback, and after that you become a veteran. That, I mean, after 20 years I can say that, yeah, sort of. लेकिन I still think there's a lot more to learn. I can never be very proud about the fact कि 20 साल कर लिए बहुत कुछ आता है, नहीं, सीखना तो अभी भी है और सीखते रहना है. So yeah, that's how it goes. Try to do the job to the best of my ability. That's all that I can say right now. Yeah, as you told, like whenever you started this profession in the starting career, like as you told, a very precise and a simple answer, like learning doesn't have any kind of ending. So you should learn daily, and the only thing you have to do in order to maintain your professional work in a precise manner, also at the same time in a very fluent manner, the only answer is training. So you should train yourself Yes. daily. You should make yourself Upgrade yourself yeah, you every should day. upgrade yourself. Even if you're like, okay, I'm 100%, like I'm an expert in it, you should always make sure that you are in the right track. You do train yourself. So only when you train yourself, as now I got the answer, like only when we train ourselves, only we are, even though we may be like, okay, I have done my 100% right, but I should not be like, okay, this will be coming at the right time. I should always make sure that it's like a muscle memory, like a muscle memory, like even if we do not have any kind of things to do, our muscle memory will suddenly kicks in the like the same way. Like if we train ourselves in front of a camera, like we are going to be a news presenter, or we are going to speak an English, I mean, in any kind of topics we are going to discuss it about, we just used to train ourselves. The only way I think is training, as you told right now. So absolutely. Okay, ma'am. So other thing is, you're passionate about teaching, right, ma'am? So yeah. How do you integrate, I mean, what to say, you're teaching many youths in India. Okay, the only thing I wanted to ask you is,
there are many things happening in today's modern world, like meta AI is coming, like any other artificial intelligence is coming. So many upgradations are happening. So how do you just incorporate these kind of upgradations in your day-to-day life? Like, okay, today I'm going to teach youth, and today they are going to they actually, the thing is that they will come and tell to us that, ma'am, these are the upgradations which is happening in today's modern world. Then we will be amazed, like, oh, these kind of things do exist. Like, okay, so now what do I have? Because all the students are already upgraded their knowledge. Now what do you think that uh, this will be the right thing to tell to the students, like, okay, this is the thing which I can teach the students, even if they are upgraded in meta AI or any kind of artificial intelligence? What is the common thing you always think that this thing is always should be with the, as an English trainer, this thing you should always teach to the students, ma'am? What is the particular thing? Yes. Yeah, I got that. Thank you so much for asking this in the first place, because as I told you, teaching students especially, वैसे तो मैं सिर्फ students नहीं, the whole professional fraternity जो है pan Indian, तो उनको भी online lessons में देती हूँ, English में communication, public speaking. एक business class है जो जो अपना business के लिए वो English learn करना चाहते हैं. But my first love will always be students, school, college, इनके जो students हैं, क्योंकि पहले से ही 2005 और 6 और so तब से मैं पढ़ा रही हूँ, and I started with kids like class 8, 9, 10, 11, 12. तो अभी क्या है, definitely the change is there. Or believe me, I mean, if I can be very, very honest, I think this is one of the best times to be alive. और हम लोगों ने ना, जो 80s 90s के जो kids हैं, हम लोगों ने इस पूरा चेंज देखा है कि जब we used to do our homework, we would never get these kind of help, that the most you could refer to a magazine or a newspaper, nothing more than that, right? Or an encyclopedia maybe. लेकिन अभी क्या है, everything is there at the tip of your finger. And students लोगों को बहुत कुछ पता भी है, they know a lot of things, right? क्लासरूम में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी क्या लगता है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस. लर्निंग भी हो रहा है और टीचिंग भी हो रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स. कोविड के दौरान ही ये ऑनलाइन का पूरा सिस्टम जो आया था, राइट? आई स्टार्टेड, यूजुअली आई स्टार्ट माय सेशन इन अप्रैल ऑल्सो, क्योंकि सीबीएसई का जो है पैटर्न, तो उस हिसाब से अप्रैल में. लेकिन कोविड ईयर में मैंने मई में शुरू किया, because I needed a month or so to master this whole process of Zoom and stuff, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे. लेकिन एक बार जब हमने यूज करना शुरू किया, there is no limit. I mean, whether it is designing your lessons, whether it is bringing the content. पहले हम कैसे पढ़ाते थे? I used to just refer to books, जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी ग्रामर पढ़ाना है, रूल्स बना लिया. अभी क्या यूज करते हैं? पीपीटी. पीपीटी में आप क्या लाते हो? दुनिया भर का जितना भी नॉलेज है, whether it is picture, whether it is some kind of a video, some kind of animation, कुछ भी, anything, everything is available there for you to share it with your students. और उससे learning, I definitely think learning is strengthened, empowered by this entire change that has come up, post COVID. So yes, as you said, काफी सारा टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारा चीजें आता नहीं था, एंड माय स्टूडेंट्स वुड पॉइंट इट आउट कि मैम ये कीजिए, वो कीजिए, अच्छा आपने ऐसा किया, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप प्ले कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स when it comes to using meta, when it comes to using stuff like ChatGPT and all. अच्छा तो है, लेकिन I always have that cautionary note. स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि don't let it replace your analytical thinking, your creative thinking. क्योंकि वो जब हो जाएगा ना, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा हम लोग का. तो करो आप, यू कलेक्ट योर आइडियाज, यू कलेक्ट वट एवर, जो भी आपका इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कलेक्ट कीजिए, लेकिन उसको एनालाइज कीजिए खुद से ना. उसका जो भी है रेशनैलिटी बिहाइंड, रेशनल बिहाइंड वट एवर यू हैव कलेक्टेड, उसको समझने की कोशिश कीजिए. पब्लिक स्पीकिंग है, डिबेट है, right? My students come up with these topics. I say, get the points, no problem. लेकिन उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको सोचो,
अगर आपका ऑपोजिशन आपको सवाल करता है उस टॉपिक के बारे में, तो आपको एनालाइज करके ऑन द स्पॉट जवाब देना होगा ना. यू कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ मेटा एआई एंड स्टफ देयर एट द फोरम. तो यू कैन नॉट लेट गो ऑफ योर ओन एनालिटिकल रीजनिंग पावर्स, योर ओन लॉजिकल जो भी है, राइट. तो या यू टेक द हेल्प, बट एट द सेम टाइम ना, अपना जो है ना, भगवान ने जो ये दिया है रियल इंटेलिजेंस, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, उसको साथ में लेके आगे बढ़ना है. सो यस, एज आई सेड, टू वे लर्निंग प्रोसेस, इट्स इंटरेस्टिंग सो टू से. Other than that, what do you think is the best way to improve anyone's English speaking skills, man? Because as I told you already, we discussed like, okay, whatever skills we have, we should always upgrade ourselves. We should always make ourselves train regularly, daily. Other than that, what is the special skill that you think that every student or every person should have so that they can have a good English speaking skill? Like, what do you think they should follow in their daily life to adapt this kind of good English speaking skills, man? या आई गेट इट. मैं ना बहुत ज्यादा बुक्स पे नहीं जाती हूँ, ठीक है. ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने भी फ्रॉम माई फ्रॉम माई कॉन्वेंट एजुकेशन, ग्रामर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था हम लोग. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामर पे स्ट्रेस देते देते ना, हम जो फंक्शनल लैंग्वेज है, जैसे हमें बोलना चाहिए, उस चीज पे ध्यान थोड़ा कम हो गया था. तो इसलिए हम लोग का इंग्लिश इतना डेवलप नहीं हो पाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव बीन डूइंग ग्रामर थ्रू आउट आवर स्कूल लाइफ. तो अभी हम लोग को ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है. कि दे ऑलवेज से कि पर्सपेक्टिव इज पावर. कि आपका पर्सपेक्टिव सही होगा ना, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा. क्या चेंज करना है इस इंग्लिश लर्निंग में एज अ होल, इफ यू आस्क मी, कि यू हैव टू लिव द लैंग्वेज. यू कैन नॉट जस्ट से कि हमने ग्रामर सीख लिया, हमने रूल सीख लिया, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, हो गया. देर आर 4 एस्पेक्ट्स. हम बोलते हैं ना LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो आपको एक इमर्सिव टेक्निक जो है, इमर्सिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो करना है. कि ये चारों चीजें एक साथ करने हैं. इफ यू आस्क मी कि आपने कैसे किया, तो आई थिंक इट हैपेंड विदाउट माय नॉलेज. स्कूल लाइफ में एक ऐसा था, माय ब्रदर वाज एक्चुअली टू मच इनटू रीडिंग. तो ही इज एल्डर टू बी बाय 2 years. तो वो ना बहुत सारी किताब लाते थे, तो कॉमिक्स होते थे, अमर चित्र कथा एंड स्टफ. तो बहुत ज्यादा कॉमिक्स. फिर हम लोग के टाइम में ये मिस्ट्री स्टोरीज होते थे, नैन्सी नैन्सी ट्रू स्टोरीज, 3 investigators, एनिट ब्लिटन के बहुत सो मेनी स्टोरीज. एंड आई एम अ मिस्ट्री बफ, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ती भी थी. तो रीडिंग से हम लोगों का बहुत, मेरा एटलीस्ट, आई कैन से दैट, स्पीक फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट, कि रीडिंग से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ था. एंड देन लिसनिंग ना, जितना आप सुन सकते हो. तो अगेन कहने का मतलब ये है, एक तो आप ये जो एक्रोनिम है ना, उसको याद रखो कि LSRW जो है, इसको आप याद रखो. एंड अलोंग विद दैट, लैंग्वेज को जियो, है ना. यू डोंट थिंक कि मेरा रीडिंग टाइम है तो मैं रीडिंग सुबह, आई एम एट माई प्रोडक्टिव बेस्ट ना, तो 1 घंटा 2 घंटा मैं इंग्लिश तब पढ़नी. पूरा दिन, पूरा दिन जस्ट कीप थिंकिंग इन इंग्लिश, लिसनिंग, स्पीकिंग टू योर सेल्फ. लैंग्वेज पार्टनर नहीं है तो खुद से बोलो. आई होप मोर इन टू द डिस्कशन विल बी एबल टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल. तो आपको जीना है उसको. फ्लुएंसी इज लाइक अ मसल, राइट. एंड आपको, आपने जैसे कहा था ना, मसल मेमोरी, तो आपको उसको ट्रेन करना है. You need to train that muscle, and it's an immersive process, continuous process. Okay, तो उसको ना आप सेगमेंट में उसको मत डालो कि सुबह ही पढ़ूंगी और इंग्लिश मेरा ऐसा इंप्रूव हो जाएगा. उसको जीना होगा. You have to speak, right? So yeah, so that is how it's a process, and you really need to have the correct perspective to do that. Yeah, the only answer I can get from you for this question is the perfect answer is in the middle. You told that if you want to be a good speaker in English, you should always think in English. That's the right thing I can get, because Correct. most of the people they'll be like, okay, if anybody questions them in English, and they'll be ready to answer them in English, but in between, what happens? Our brain will interpret the question with the normal native language. So whatever the Yes. languages they're in, they'll be interpreting in native language, and okay, then how we are going to speak in English? They'll be translating it, and they'll be giving it. The thing is that they'll be knowing the answer, the perfect answer, but the interpretation happens between the native language and the English language, and because of this,
there are some kind of troubles happening, some trembling happening. Okay, I think the best way we can just improve ourselves is fluency, simply talking daily, and also at the same time you should always think whatever you wanted to do. Like, okay, the next thing I want to do is I'm going to the next room, I'm going to have a cup of coffee. Okay, we should think it in English language. That's the right thing. Okay. Exactly. Other than that, Exactly. yeah, students are today's worlds. They're like, okay, moving on abroad to different countries like Europe, like America, and these kind of things. What happens is that even if they're having good grades in their schools and in their high schools, what happens is that they have to clear some examinations for English proficiency. Like if you want to enter Toronto, Canada, they have to pass this IELTS exam. They have to pass in other kind of things. They have to pass this TOEFL, and they how do you what is the process that you think like most of the students face as difficulties in learning this kind of English proficiency skills? Like, okay, ma'am, I'm finding difficulties in clearing my IELTS exam. I'm finding difficulties in order to have a good Cambridge English. So, what are the common mistakes that students do in this kind of proficiency skills examinations? And how do you think they can upgrade themselves and they can clear this kind of IELTS exam, ma'am? Yes. See, IELTS and TOEFL and the other exams that you're talking of, इनका ना एक पैटर्न होता है. इनका एक पैटर्न होता है. You won't believe it. जब मैं दिल्ली में थी, तो I worked with an institution as a counselor, तो study abroad counselor जो है. And उन लोगों का जो IELTS का trainer था, तो she left at one point of time, and they just out of the blue they asked me, क्योंकि English सही था मेरा, ठीक ठाक था, and I was already working with radio at that time. तो उन्होंने कहा कि ये करो, और मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल कि IELTS होता क्या है. And then I went for a training under a person. So that lady, she happened to be an aged lady and very, very experienced. तो उन्होंने एक चीज मुझे बताया था, मुझे अभी भी याद है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझना बहुत जरूरी है. कि इन IELTS we are talking of a comprehension part, right? We are talking of reading, listening, speaking. तो आपको जब पूरा पैटर्न का आइडिया होता है, then you take it up one by one. जैसे मैंने LSRW जो कहा था, इट इज मोर और लेस दैट ओनली. एक तो आपको लिसनिंग जितना आपका अच्छा होगा, क्योंकि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप द लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IELTS. तो आप लिसन करके उसको समझने के लिए यू हैव टू गेट यूज टू द साउंड. क्योंकि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच दिस इंग्लिश मूवीज इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लेकिन उतना नहीं समझ में आता था जितना आज समझ में आता है. तो क्यों ऐसा? क्योंकि विद टाइम I have got used to that accent and it is clearer to me now. तो you have to give everything time. और जैसे मैंने कहा, पैटर्न को समझना कि लिसन करके उसको कॉम्प्रिहेंड करके फिर प्रैक्टिस अंडर टाइम्ड सेटिंग्स, राइट? फिर स्पीकिंग भी जैसे आई वाज टॉकिंग ऑफ LSRW, यू डिड से कि थिंकिंग इन इंग्लिश राइट फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप, है ना? कि ओके, आई हैव वोकन अप नाउ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द बाथरूम, आई एम गोइंग टू ब्रश माय टीथ, आई एम गेटिंग रेडी. तो ये अपने आप से ना आप बात करते, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करो, है ना? तो वो थिंकिंग जो है ना, वो पैटर्न बन जाता है. हम लोगों का ब्रेन का एक अच्छा चीज क्या है कि द ब्रेन रिकग्नाइजेस पैटर्न्स, उसको बहुत अच्छा लगता है पैटर्न. तो जब पैटर्न बन जाता है ना, धीरे धीरे इट बिकम्स अ हैबिट एंड यू अटेन मास्टरी. तो IELTS या TOEFL या जो भी है, आपको तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आना चाहिए. एंड वो डेफिनेटली जो सेगमेंट्स जो है उनको अंडर एग्जाम कंडीशंस, it's all available out there in the net. You just have to get hold of the question papers, right? You have to see the samples and whatever is available. और आपको बैठना है उसके साथ, पहले से ही नहीं डर जाना है उसको. And you have to think of it in very simple terms. जैसे कि I always feel कि complexity is the enemy of execution. किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स इतना मत सोचिए, उसको लेके बैठिए ना, 5-10 मिनट बैठिए, यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट दैट टफ. तो यस, सेगमेंट वाइज प्रैक्टिस, familiarity with what you are dealing with, and then you will find that it is not that tough. It's just a structured way that you need to approach it. And also at the same time, you have told me that you used to watch English movies in order to have some good proficiency in English. So
what are the movies that you would recommend your students to watch so that they'll be having a good knowledge in English, ma'am? Can you recommend any kind of Okay. Hollywood movies, or even any kind of Yeah. not only Hollywood movies, any movies like a Turkish movie, a Chinese movie, a Japanese movie, whatever movie we see, and it must be like in English, right? So what are the movies that you would recommend? Because even when I was used to be in college, I used to have many teachers coming from different, like at the end of the year during my final years, they'll be coming and they'll be helping us in order to pass our interviews. We'll be having a special session, like we'll be having like around 1 hour, and at these times the teachers used to come to us and they'll be encouraging us to watch daily at least 2 English movies in order to make ourselves very good in English. So at this time, what do you think that, okay, this movie inspired me and this movie made me a good speaker English? Okay. Firstly, there, I have to say something कि I never watched movies to improve proficiency. हम लोगों ना comfort level अलग अलग होता है. For me, it has always been reading. Reading has improved my English like nothing else. तो आपको भी तो पहले तो आपको समझना है कि आपका LSRW में कौन सा है वो एस्पेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है. मेरे लिए रीडिंग था. I used to watch movie because I was a movie buff. मुझे अच्छा लगता था. Action movies and detective and this and that. So now coming to the part where you said कि if I can give references. एक मूवी है, वैसे तो there are quite a few. I'll give you series भी मैं कुछ बोलूंगी. Pursuit of Happiness. Well, Pursuit of Happiness with Smith ना Will उनका Smith. मूवी है. And it is really very good, not just because it is so gripping, उनका acting, yeah, the story and everything else, but the use of language, the syntax and everything else. तो आपको उसको ध्यान से, और मूवीज जब आप देखते हैं ना लैंग्वेज लर्निंग के लिए, आपको एक चीज याद रखना है कि मूवी में मत खो जाइए. तो उसके लिए आप एक बार मूवी देख लीजिए, गेट फेमिलियर विद द स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग एल्स. और उसके बाद उसको समझने के लिए कि कैप्शन दे के एक बार देखें, है ना, विदाउट कैप्शन से एक बार देखें, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं, राइट. सो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ, डेफिनेटली इज अ वेरी गुड मूवी. आई यूज्ड टू वॉच, आई रिमेम्बर इवन ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, जो शर्लक होम्स का जो सीरीज था, दे हैव बीन क्वाइट अ फ्यू सीरीज. मैं जो देखती थी ना वो जेरेमी बेट्स जो एक्टर थे उनका सीरीज था, वो उनका एक्ट किया हुआ. फिर हर्क्यूल पोरो सीरीज, तो ये सारा मैं कुछ देखती थी. एंड आई प्रेफर्ड ब्रिटिश, क्योंकि हम लोग के स्कूल मतलब कॉन्वेंट एजुकेशन में क्या है, हम लोग थोड़ा सा ब्रिटिश फॉर्मेट जो है वो फॉलो करते थे, और वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर होता है अंडरस्टैंड करने के लिए. तो अगेन फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टफ, ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट दैट आपको ब्रिटिश ही देखना है या अमेरिकन ही देखना है, नथिंग लाइक दैट. योर कंफर्ट लेवल, यू शुड जस्ट फील फ्री टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आपको किसमें वो लग रहा है, कंफर्ट लेवल किसमें आपका ज्यादा अच्छा है. Having said that, currently I think Friends series is very interesting. एक तो वो कैप्शन आ जाता है, वो इंटरेस्टिंग भी होता है, तो सुनने में भी मजा आता है, वी एंजॉय इट ऑल्सो. बट हाँ, लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट के तरफ मत इंक्लाइंड हो जाइए. यू रियली हैव टू सी टू इट दैट यू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन आपका सही है, आपको प्रोनाउंसिएशन आप कॉपी कर पा रहे हैं, शेडोइंग टेक्निक हम बोलते हैं, तो आप शेडो कर पा रहे हैं या नहीं, उसको रिपीट कर पा रहे हैं या नहीं. तो यस, दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स ना. तो या मोस्टली ब्रिटिश मूवीज आई वुड प्रेफर, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो जाते हैं, समझ में भी ज्यादा आता है अमेरिकन मूवीज से. लेकिन अगेन एज आई सेड, apart from movies, you can definitely go for the entire जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. आई रियली रियली एंजॉयड बीबीसी का जो कुछ भी आता था. हम लोग जब रेडियो में थे तब हम लोग को तो बोला गया था कि यू शुड वॉच बीबीसी न्यूज एंड स्टफ, ताकि आप लोग को एक्सेंट इज अ डिफरेंट इशू, ओके, एक्सेंट के लिए नहीं, टू अंडरस्टैंड, एज आई सेड. तो बीबीसी का जो भी इन ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो सुनने को देखने को तो देयर इज अ वर्ल्ड. आज के दिन में तो ऑडिबल भी है. Yeah. ऑडिबल में पॉडकास्ट बोलिए या बुक्स बोलिए या जो कुछ भी बोलिए, सो इट्स, यू हैव अ ट्रेजर हाउस ऑफ कंटेंट या जो भी है जो आपको हेल्प कर सकता है. आपको बस एक्सप्लोर करने की देरी है, राइट. सो या.
Yeah, I That's do. it. Yeah, I do agree that A Pursuit of Happiness. I have seen that movie. Will Smith movie is a perfect movie, not only for English proficiency but for your life. It's just a perfect movie because they'll be Exactly. speaking in a very slow, simple manner that everyone can understand. And also, Yes. Friends series, like starting Friends series. I think it's like season 1 to season 10. It was very good actually. Mhm. They'll be Mhm. speaking in a very simple English, like it was actually time frame between 1995 to 2004. The series Mhm. was actually aired in TV, and Mhm. it's actually not even a British series. It's actually an American Mhm. series, and American, yeah. it's actually what to say. It's actually good to see because they'll be having very simple English communicating with each other. And also, you were Mhm. speaking about books, right? Okay, you were telling like, okay, I'm a movie buff, but I do not watch movies in order to improve my English proficiency. I just read books. So please tell us what kind of books your students can read so that in order to make the English proficiency go to a very higher level, ma'am. Yeah, when I talk about these things, it will seem like a monotone. क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि I'm too much into detective series and ये वो ना, तो जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने मुझे हेल्प किया जिस बुक ने, that was Conan Doyle's Sherlock Holmes series. उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, Sherlock Holmes का बहुत ज्यादा स्टोरीज है नहीं, but I believe I have read everything. जितने भी एडवेंचर्स ऑफ केस बुक ऑफ ये वो नोवेल जो कुछ भी लिखे थे उन्होंने, सारा मैंने पढ़ लिया था वो कॉलेज डेज में ही, स्कूल डेज में, सोटो से। तो उनका इंग्लिश, कुनान का जो इंग्लिश है, इफ यू रीड द शर्लक होम्स एंड इफ यू हैव रेड इट, देन यू रियलाइज देयर इज अ वंडरफुल फ्लो टू द लैंग्वेज, वंडरफुल फ्लो। मतलब जब आप पढ़ेंगे ना, अभी भी मैं यूज करती हूँ, यू वोंट बिलीव इट, कि सपोज आई कंपेयर प्रोग्राम्स, आई एंकर प्रोग्राम्स एज वेल, पॉडकास्ट भी मैं कंडक्ट करती हूँ, तो एक फ्लो चाहिए होता है। When you're speaking in English, you really need that flow. तो कभी कभी क्या होता है कि if I'm not reading too much, I lose that flow. I get back to Sherlock Holmes, right? तो उनका एक डायलॉग ना किस स्टोरी में है, डोंट आस्क मी, बट ही हैड रिटन समथिंग लाइक mediocrity knows nothing greater than itself, but talent instantly recognizes genius. तो पता नहीं मुझे वो इतना अच्छा लगा था, mediocrity knows nothing greater than itself, but talent instantly recognizes genius. तो शर्लक होम्स का थोड़ा सा वैसा था ना, वो अपने आप को मतलब वाटसन को एनी टाइम बोलते रहते थे कि एलिमेंट्री माय डियर वाटसन, तो शो ऑफ करने का, तो थोड़ा सा उस टाइप का था, ह्यूमरस था, लेकिन देयर वाज सच ब्यूटी इन दैट लाइन। आई रिमेम्बर्ड इट समहाउ, ठीक है ना? तो लैंग्वेज अगर बोले तो शर्लक होम्स का, हाँ, कोनान डॉयल का बुक्स मुझे पसंद था। एंड बाकी आई थिंक इट वाज ऑल इन दैट सीरीज ओनली। अगाथा क्रिस्टी का पूरा मिस मार्पल सीरीज, देन आपका ये हर्क्यूल पोयरो का सीरीज, तो ये सारा कुछ मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी। एंड आई एम अ बंगाली, सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ टैगोर आल्सो, बट दैट इज अगेन इन बंगाली। Since I'm born and brought up in Assam, I can read literature in Assamese. So I did, Homen Burgohain, he happens to be my favorite. तो उनका भी मैंने काफी सारा Assamese books पढ़ा है। तो उससे क्या होता है कि when I started, since we're talking of language, it is just some extra information that I'm giving, कि English हो, हिंदी हो, अमृता प्रीतम, she's my favorite, one of my friends in Delhi, she had introduced me to अमृता प्रीतम, और पढ़ा था मैंने स्कूल में, I had Hindi till class 10. कुछ भी लैंग्वेज हो, whether it is Bengali, English, Hindi, or Assamese, I think when I started reading, वो लैंग्वेज का जो ब्यूटी है उसको मैं पकड़ पाई थी। कि जब मैं बोलती हूँ कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, याद आते हैं, हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, तो वो फ्लो आता है मेरे लैंग्वेज में। एंड आई थिंक दिस इज कर्सी बुक्स। तो रीडिंग, फॉर मी रीडिंग वर्क्स, of course it may not work for all my students, most of them I have seen they prefer watching, I mean listening, so to say, watching movies and stuff उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। स्पीकिंग तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, as far as the suggestion you had said, for me that is what I would suggest। जो पुराने क्लासिकल राइटर्स हैं उनमें दो और राइटर्स हैं, एक ओ हेनरी है, उनका शॉर्ट स्टोरीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए। पता है क्या है कि इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग, तभी आई कैन सस्टेन दैट हैबिट। तो ओ हेनरी का शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन, साकी जो राइटर है उनका भी जो कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, इवन दैट, या बेसिक मोर और लेस दीज आर द ऑथर्स
that I had read, और मुझे you might be surprised that I'm not saying Dickens, Shakespeare and stuff, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और जितना कोशिश किया था मैंने पढ़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, because you know the language is very tough. बहुत ज़्यादा classical English मुझे नहीं समझ में आता है. But these authors had the flow which helped me improve my English. So yes, you can read these authors. Or Indian, how can I forget my Indian authors? R.K. Narayan and Ruskin Bond. You know, the best authors that you can read, जिनके किताबें पढ़ने से आपको फ्लो आता है, you know, and the simplicity of language, it's anything that is simple. मैंने बोला ना, complexity is the enemy of execution. जितना आप simple रखेंगे ना चीजों को, उतना समझ में भी आता है आपको भी और सामने वाले को भी. सो इंडियन ऑथर्स में जरूर आर.के. नारायण और रस्किन बॉन्ड जो है, इनको जरूर आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा if you haven't already. Yeah, that was Yes. a best. Yeah, that was actually a great discussion with you, speaking about what kind of books we should read, and also speaking about what kind of movies we should watch, and speaking about English accent. So whenever we move to a foreign country, we always they always expect us to maintain their accent. Like English is the common language, but if we go to Britain, they'll be speaking in a British accent. If we go to US, they'll be speaking in an American accent. And if we go to Tokyo, they'll be speaking in a Japanese accent. But the thing is that all these kind of people are just speaking in a very common language, English. So at this point of time, what do you think that we should always maintain whatever accent we are in? Like an American coming to an Indian, they can't speak like Indian accent. They can't pronounce the Indian accent of English. And also at the same time, if Africans comes to India, they'll be speaking in their own accent. So what do you think about this accent, ma'am? Should we always stick to our accent, or we should always try to communicate with the respective accent? Like whenever we are going to America, we should speak in an American accent? Or is it like something like, okay, we should never mind about the accent, the only thing we have to mind is our clarity of message, what we are trying to communicate in English? So what do you think about this kind of accent things, ma'am? Okay. As far as accent is concerned, I'll tell you what I have been told from my industry experience. When I say industry, I mean radio and television. During our training days in Delhi, our chief editor, he would always tell us one thing: clarity is king, right? So when having said that, I think it is more or less clear as to what I have indicated. See, British accent, American accent, Australian accent, African accent, all of us are bound to have one. We Indians have our own accent, है ना? लेकिन इसमें एक्सेंट इतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि आप क्लियरली कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं. सो माई टेक ऑन दिस इज दैट बी फेमिलियर. आपको फेमिलियर होना होगा. क्यों फेमिलियर होना होगा? If your job demands that you speak with a British accent or an American accent, फिर तो आपको वो learn ही करना है. लेकिन remember, communication is always two way. तो आपको समझना भी तो होगा ना किसी को. तो समझने के लिए आपको accent जानना आपके लिए जरूरी है. But if it is not a requirement, say for instance for me, when I'm reading the news or when I'm interacting with my learners, I don't really need an accent. So I always, right from the beginning of my career till today, I have always aimed for a neutral accent. I try to speak in a neutral accent. क्योंकि मेरे लिए important क्या है? Clarity. कि मैं जो भी बोलना चाहती हूँ, है ना, उसको मैं clearly, confidently, impactfully convey कर सकूं, right? लेकिन having said that, जानने में क्या बुराई, समझने में क्या बुराई है? थोड़ा सा अगर समझ लें कि ब्रिटिश एक्सेंट कैसा है, अमेरिकन एक्सेंट कैसा है, गेट यूज्ड टू इट, ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़े, आपको समझ में ज्यादा आए. आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसको समझना भी जरूरी है. लेकिन टू कॉपी दैट एक्सेंट, इफ इट इज नॉट अ मस्ट, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका जॉब डिमांड नहीं करता है वो, तो क्यों उसको उसके ऊपर इतना पसीना बहाए? तो just let it go. हाँ, लेकिन maintain a neutral accent. Having said that, I'll just repeat what I had said earlier. Clarity is the king here, right? So aim for clarity and fluency, obviously. But yeah, here, when we talk of accent, I would say the stress should be on clarity more than accent.
The other thing is that Yeah. whenever we always keep in mind that okay, we should speak in a clarity that they'll be able to, opposite person is trying to, they will be able to understand what we are trying to communicate. The thing is that we always forget about the basic grammar rules which we should always incorporate in our basic English. So what kind of grammar rules are the basic things that you as English trainer, you always expect other people to maintain when they're communicating with you in English? What are the basic grammar rules that people always forget, and what are the basic grammar rules that are mandatory in order to speak in English, man? Okay. Before I come to that, I would like to talk about the cognitive load theory. Cognitive load theory, मैं बहुत ज़्यादा technically तो नहीं इसको समझाने जा रही हूँ. All I need to tell you is that grammar के बारे में अगर बहुत ज़्यादा आप सोचने लगेंगे ना, तो आपका fluency जाएगा कहीं ना कहीं. If you are a speaker who is just learning the language, ठीक है ना? तो initial stage पे हाँ grammar पे focus रहना चाहिए, लेकिन don't make it the be all and the end all of your language learning process. ठीक है ना? Now, having said that, now let us come to grammar. जरूरी है, right? At one point of time, I used to think grammar is everything, but right now I see कि नहीं, there are other ways of learning the language also. Fluency को build up कीजिए, grammar अपने आप immersive या immersion technique जब आप use करेंगे ना, तो वो grammar अपने आप आ जाता है. Now coming to the topics, the first topic that I find कि सबसे ज्यादा जो हम mistakes करते हैं ना, वो है subject verb agreement. Subject verb agreement, you know, your singular subject should always take a singular verb. Singular verb always comes with an s, right? Rules जो भी है बहुत simple rules है, ऐसा भी कुछ technical कुछ है नहीं, उसको समझाने का तरीका है, समझने का तरीका है. Plural verb should always come with a, sorry, plural subject should always come with a plural verb. तो ये subject verb agreement जो है, इसमें हम काफी ज्यादा mistakes करते हैं, the learners को मैंने पाया है. So that is one thing you need to, you know, master. Second, I would say टेंस का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको ना ये जरूरी है कि आप याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट किस सिचुएशन में कौन से टेंस को यूज करना है वो समझने के लिए ये समझना ही पड़ेगा वैसे, ठीक है ना? लेकिन उसको फन वे में समझेंगे उसको ना. स्टडीज या डोंट मेक इट अबाउट एकेडमिक्स, ओके, मेक इट अबाउट द स्किल. टेंस, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया आपका. When it comes to parts of speech, I would say prepositions is very important. Verbs तो है ही, देखिए वो tense में subject verb agreement में वैसे भी घुसा हुआ है, तो prepositions is very important. Why not at 1985? Why in 1985? है ना? Why not in 6:30? Why at 6:30? तो ये सारा छोटा छोटा कुछ चीज है ना? कब for यूज करना है, कब since, period of time होगा for बोलेंगे, point of time होगा since बोलेंगे. तो ये थोड़े थोड़े कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि इनमें जब हम मिस्टेक्स करते हैं ना, तो इट कम्स आउट इन अ वेरी क्रूड वे, तो वो दिखता है ना? और साथ ही आज के दिन में कंटेम्पररी मैंने जो देखा है, जो हम लोगों ने भी इतना नहीं उसमें स्ट्रेस दिया था ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, फ्रेजल वर्ब्स, कोलोकेशंस, कि हम ना वर्ड बाय वर्ड ना जान के, अगर हम फ्रेजेस, अगर हम चंकिंग करें, यू नो, यू डू नॉट वेयर योर कोट, गलत नहीं है, आई एम वेयरिंग माई कोट, लेकिन नेटिव स्पीकर्स ना वेयर तो नहीं बोलेंगे, ओ प्लीज गिव माई कोट, आई नीड टू पुट ऑन माई कोट, है ना? तो ऐसे करके जब हम चंकिंग करते हैं या फ्रेजेस यूज करते हैं, दैट साउंड्स मोर नेटिव. तो कॉलोकेशंस जिसे कहते हैं, कॉलोकेशंस इज लाइक, यू नो, विच वर्ड्स गो विथ विच वर्ड्स. सो हम बोलेंगे कि हैवी शार्ड्स, है ना, हैवी शार्ड, तो बहुत ज्यादा, यू वेव फीवरिशली, तो ये कौन से वर्ड किस वर्ड के साथ आ रहा है, तो ये चंकिंग जो है उसको समझना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, कि नेचुरल फ्लो में आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फोर्सफुली इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना? डायरेक्ट ट्रांसलेशन का जो चार्म चला जाता है ना लैंग्वेज में से. तो यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशंस डेफिनेटली, स्पीच, वॉइस भी है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन इट कैन कम एट अ लेटर स्टेज. और फ्रेजेस और कोलोकेशंस पे तो जरूर ध्यान दीजिए. यू नो, देयर आर एवरीडे, सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है. एवरीडे जो है फंक्शनल लैंग्वेज के लिए जो चाहिए, है ना, तो उसी पे ध्यान देके उस चीज को मास्टर अटेन करने की कोशिश कीजिए. यू विल साउंड मोर नेचुरल. और लेकिन अगेन टुवर्ड्स द एंड,
ये फिर से मैं बोलूंगी कि ग्रामर पे स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत स्ट्रेस दीजिए कि आप ना बोलने से ही घबरा जाए। कॉग्निटिव लोड नहीं होना चाहिए उसका, है ना, कि ग्रामर सही होना चाहिए तभी मैं इंग्लिश। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोलिए ना, इट्स ओके ना। थोड़ा सा फेल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सो डोंट लेट इट होल्ड यू बैक, है ना। उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए, बेखौफ बोलिए, वैसे सीखिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लेट नॉट अ सिंगल फेलियर गो टू वेस्ट। सीखना है, कुछ करके सीखना है ना। माइक्रोवेवेबल तो है नहीं ना, सक्सेस इज नॉट माइक्रोवेवेबल, इतना पटाख से नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, फ्लुएंसी विल आल्सो नॉट बी बिल्ट इन अ डे। तो उसको टाइम दीजिए बस, बट बी एट इट कंसिस्टेंट। Yeah, of course, we या have to maintain some kind of good grammatical skills in our English language in order to communicate what we are trying to communicate. Because I remember a scene in Mission Impossible. The first scene will be like Tom Cruise will be hanging on to a plane. That's an American aircraft. That's kind of aircraft which is used to go for wars kind of situations, and he'll be hanging outside the plane. And one of his colleague will be asking like, okay, I'll be just opening the door of the plane, so are you inside the plane? He will be telling like, I'm not in the plane, I am on the plane. Like he'll be hanging outside the plane. So the correct proposition is like, okay, it's not like I'm inside the plane. He should not tell like I'm in the plane. So the agent, the colleague will be totally like, okay, Tom Cruise is inside the plane. So these kind of things, the others things we should plan accordingly. He'll be hanging and he'll be screaming like anything like, I'm not in the plane, I am on the plane. Then ऑन the द agent प्लेन। will be going totally confused. Oh my God, because the flight is already flying in the sky. The thing is that he is hanging on the plane. So सो he should, ऑन साउंड्स क्वाइट डेंजरस। yeah, he's hanging on the plane, so it's like he's hanging outside the plane. So this is a very simple scene which portrays us that we should use prepositions and grammar skills in English language in the correct way, otherwise hassles will happen. So that's एब्सोल्युटली। that's the या kind of things डेफिनेटली। to happen. And the other thing is that non-native English speakers, so they always try and communicate with you as an English trainer. What are the common mistakes you think that non-native English speakers do commit in their daily life, and what kind of things you do advise them in order to overcome the mistakes they do in their daily life, and how they can improve their English? Like, what are the things you find that, okay, these are the common mistakes which they do in their daily life when they speak in English? Right. So we have discussed a few of these, कि एक तो है ना कि they just try to translate, that in they think in their native tongue, and then they translate it accordingly. तो जैसे हमने एक डिस्कस किया था पहले ही कि you have to start thinking English। आपका जो मैंने बोला ना कि आपका ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो द मोमेंट somebody has asked me that, आई एम रेडी विद एन आंसर, क्योंकि माई ब्रेन इज ऑलरेडी यूज टू थिंकिंग इन इंग्लिश। तो वो थिंकिंग इन इंग्लिश करना बहुत जरूरी है, जगह पे बैठ के ट्रांसलेशन नहीं करना। सेकेंड इज कि somehow कहीं कहीं पे बहुत सारे लर्नर्स मैंने देखे हैं, आई एम नॉट गिविंग अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, ओके, बिकॉज सम लर्नर्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब हैवी वोकैबुलरी यूज करेंगे, तो फिर वो ना सुनने में अच्छा लगेगा, दैट इज लाइक गुड इंग्लिश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना सेंटेंस, जो सिंटैक्स होता है, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम हड़बड़ा जाते हैं। व्हेन वी यूज वर्ड्स विच वी आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग, तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत साउंड करता है। तो आई वुड से स्टार्ट स्पीकिंग इन सिंपल इंग्लिश फर्स्ट ना। सिंपल इंग्लिश को पहले लेट अस ट्राई टू मास्टर इट, एंड उसके बाद हम प्रोफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश लर्निंग का जो सबसे मैंने देखा है प्रॉब्लम एरिया जो है, फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, ये है कि एक तो हमें ना एक आइडिया है कि इंग्लिश सीखना है, एंड देयर इज अ वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी इन द मार्केट। इंग्लिश सीखना है, आइए लेट अस स्टार्ट, एंड दिस इज हाउ वी डू इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, आपका लेवल क्या है। वी यूजुअली ना ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज लेवल देते हैं कि वी आर बिगिनर लेवल, वी आर इंटरमीडिएट लेवल, और वी आर एडवांस्ड लेवल।
CEFR जो है कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, वो तो इनफैक्ट दे गिव अस 6 different segments as far as English proficiency is concerned. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि where you stand. उसके बाद ये समझना कि which technique works for me, कि कौन सा हम टेक्निक यूज करके इट इज जस्ट, जैसे कि मैंने कहा, फॉर मी रीडिंग वर्कड, आपके लिए रीडिंग नहीं हो सकता है, आपके लिए लिसनिंग हो सकता है ना, तो यू गो फॉर इट. आपके लिए राइटिंग हो सकता है, मे बी यू फाइंड राइटिंग एब्सोल्युटली बोरिंग, लेकिन थोड़ा बहुत करना है LSRW को, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट थिंग. तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड एंड विच टेक्निक वर्क्स फॉर यू. उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना चाहिए. ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को इंग्लिश सीखना है एंड वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर एंड वी आर डूइंग दिस एंड दैट डजंट वर्क. एंड मोर देन स्टडिंग इट, very simply I'm telling, more than studying the language, use it. आपको बोलना है, जैसे मैंने बोला ना कि डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक. आपको उसको यूज करना है, आपको इसको यूज करना है, प्रैक्टिस करना है. देयर आर टेक्निक्स, इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली डिस्कस कि कैसे करना है. कि देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज एंड यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे एग्जिस्टेंस. तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह मत सीखिए. यूजुअली वी डू दैट. इंग्लिश सीखना है, बाप रे 1 घंटा मुझे सुबह पढ़ना होगा, होमवर्क है, ये है वो है. नो, यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इमर्सिव जो मैं कहती हूँ टेक्निक. तो हाँ, दीज आर द थिंग्स. एंड जो हमने ग्रामर का जो हमने एक्सप्लेन किया था, दोज आर द मिस्टेक्स दैट दे यूजुअली मेक व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग. सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन इज अ बिग इशू. प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक करना है. जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी, इट्स नॉट अबाउट द developing the British or the American accent. It's about clarity, right? So those are the things, yeah, common On the things. other hand, in the middle of the conversation, somewhere you told like, okay, even if you're not perfect, you should always maintain fluency in English language whenever in communicating with the other person. So what do you think that the fluency is very much important more than the perfection? So why do you think like that, ma'am? When I say fluency, उसमें I have talked of imperfection already. तो when I say fluency, I mean the flow आते रहना चाहिए, ठीक है ना, भले आप गलत बोल रहे हैं. ओके, अभी देखिए क्या है कि जब भी लैंग्वेज सीखना होता है ना, तो मोस्ट ऑफ माय लर्नर्स जो बिगिनर स्टेज में है, वो बोलते हैं कि सर मैम बहुत टफ है, वी आर रियली वेरी नर्वस व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश. पब्लिक स्पीकिंग का कुछ कुछ जब कोर्सेज करते हैं हम, स्पेशली 1-to-1 बेसिस पे जब सेशंस होते हैं ना, तो इफ आई गिव एन असाइनमेंट लाइक अ टॉपिक एंड यू नीड टू स्पीक, आई हैव टॉट यू ऑल द टेक्निक्स, यूज दीज टेक्निक्स एंड देन स्पीक, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं. Now, what I want you to understand is that you are not afraid of the language. Believe me, it is not the language that has scared you. Okay, you are afraid of being judged. कि जज करेगा कोई कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. तो वो जो मैं बोलती हूँ ना, ट्रेनिंग योर माइंडसेट, उस ना है, नहीं आता है मुझे. How many people, suppose I'm a Bengali, now I go in front of an American and I make fun of him, hey, तुमको बंगाली नहीं आता. Will it sound possible? It's totally, it's ridiculous. Why should I judge somebody for not knowing my language? So English at the end of the day is just a language. तो उस mindset से निकलना है कि I'm being judged. So having said that, what I want the learners to understand is that fluency will become an issue if you make it an issue. आपको बोलना है, जो भी है, make mistakes, doesn't matter. Instead of saying I went yesterday, you said I had gone yesterday. It's okay, it's wrong by the way, है ना, क्योंकि yesterday time जब आपने already mention किया है, उसमें time reference है, तो आपको perfect past perfect use नहीं करना है, आपको simple past use करना है. तो instead of saying I went yesterday, आपने बोल दिया I had gone yesterday. Big deal, doesn't matter. जब आप बोलेंगे गलत, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, I'll correct you. The moment I correct you, you know for sure कि अभी नहीं होगा, ये गलती और नहीं होगा. तो जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, मैं या जो भी आपके ट्रेनर है, आपके मेंटोर है, वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मैं स्ट्रेस देती हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, ओके, दैट फ्लुएंसी is more important than anything else. So right now, more than learning the language, use it again and again. When you are in front of me,
more than learning the language, use the language ताकि वो corrections हो. So yeah, that is the significance. Yeah, as you told, it's like doing a math. Like if you're going to do some kind of math, you should not read the math. You should just work it out. Then only you'll be able to clear your exams. Like you can't study math. Okay, this step comes after this step. Okay, then we will arrive at the solution. It's not like that. One, if we go and mug up with the some kind of math sums, and we are going to give a test, then we'll be like, okay, what's the next step, and we'll be totally confused. So what the thing is that if you want to clear your max examinations, you should always come, just write down the steps. You should not always try to have it in your mind. You should try to work it out. So that's what you're trying to Work do. it out, Yeah, exactly. you should try to work it out. You should try to communicate with it. So as I asked, like why we should always concentrate on the fluency, even if it's not perfect. The thing is that you have already answered that what thing is holding them back is the thought that what others are going to think. Like if you're Judge, going yes. yeah, what others are going to judge. So this thing, like it stands as an obstacle between them and the English language. The only thing which we can destroy this obstacle is a simple fluency in English language. Even if you're going to commit some mistakes, then you are there to correct. And when we are able to see, okay, these are the mistakes which we are facing when we are speaking in a very fluent manner, we can just correct it. So if we are not speaking in a fluent manner, then we of course we do not know what kind of mistakes we are actually making. The only thing we have to do is just keep on trying, use it, just work on it. So that's what you're trying to tell. Okay, ma'am. So other than students, you also train professionals. So what do you think these professionals are having some kind of backlogs in having a very good corporate English? Because professionals, whenever they go and meet any kind of other professionals in corporates, they should always communicate with a good corporate English. Because if you want to have a deal, and if you want to finish a deal like around 10 cr or 20 cr business, so it's not like we are going to speak to a normal person. It's like we are going to speak like a multi giant companies. They'll be having investments from the western countries like American and European countries. So at that point of time, they'll also be, I mean, from India, they'll be having some kind of persons who will be going directly speaking to the CEOs of Western companies. So at this point of time, you also train professionals. So what do you think that there is a common backlog they face, so that they are not able to incorporate the correct corporate English move? Okay, now see, as far as the jargons are concerned, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगी कि उन लोगों को corporate jargon जो है वो नहीं आता. At least I haven't encountered too many such learners जिनको corporate jargon नहीं आता, क्योंकि वो ना work setup में कुछ ना कुछ वो pick up कर ही लेते हैं. थोड़ा बहुत, मतलब English, you won't believe it, English अच्छे से आ नहीं रहा है, लेकिन corporate jargon उन लोगों ने pick up कर लिया. And that is the power of LSRW, जो मैंने कहा था, वो लिसन करके भी हम लोग सीखते हैं. और उसके मतलब मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, most of my learners at least now, who are having a problem with the language in the corporate setup, the professional setup, उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनका बैकग्राउंड जो है वो वर्निकुलर मीडियम में रहा है, right? So, which is not a problem as such. Don't let us not say it's a problem. But the point is that वो थोड़ा सा उनके लिए एक setback है when it comes to the language, क्योंकि they have not been exposed to the language as such during their school days completely. तो that is the main problem. कि ना वो vernacular medium में पढ़े हैं, जिसके वजह से उन्होंने इंग्लिश को इतने अच्छे से वो मास्टरी या प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं कर पाए. तो what I need to do is, more than anything else, I just have to give them the structured roadmap कि देखिए सर, you're not going to learn it in say, जैसे हम बोलते हैं ना, usually we say 10 days में, 5 days में, आजकल तो 3 days में, 5 days में, 30 days में. It doesn't happen that way. लेकिन हाँ, एक फाउंडेशन जो है वो हम दे देते हैं और उसको आपको फॉलो करके आगे ले जाना है, क्योंकि सब प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं.
आपको बिगिनर स्टेज में है तो फिर इंटरमीडिएट में जाएंगे, फिर जाएंगे आप मास्टरी लेवल पे, है ना, एडवांस्ड लेवल पे। तो वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो उनका प्रॉब्लम मोस्टली इज देयर वर्निकुलर बैकग्राउंड, ओके, इट इज नॉट रियली समथिंग एल्स। और most of the people who come to me, थोड़ा सा why I become so passionately involved with my learners, कि उनका टेक्निकल वाइज टेक्निकलिटीज वाइज वो बहुत ऊपर है, दे नो सच अ लॉट अबाउट देयर वट एवर इज द वर्क फ्रंट, लेकिन उनको देखा जाता है उसी लेवल पे। टेक्निकली दे आर हियर, लेकिन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वाइज दे आर हियर, एंड पीपल एज अ होल आर सीइंग देम हियर, दे डोंट इवन सी दैट टेक्निकल वाइज दे आर सो। तो उसको अगर मैं अप कर देती हूँ ना, तो उनका करियर वाइज दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो दैट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ अ थिंग। Yeah, so that's basically the idea. It's not a lacuna या ऐसा कुछ उनका वो प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉबैक नहीं है। इट इज जस्ट दैट दे हैड नॉट बीन एक्सपोज टू द लैंग्वेज। अभी मुझे एक्सपोज करना है उनको लैंग्वेज के साथ, और उनको टेक्निक देना है कि देखिए सर, दिस इज द वे यू लर्न इट एंड यू टेक योर लर्निंग टू द नेक्स्ट लेवल ग्रेजुअली। Okay, ma'am. So other than that, if through this interview, if you want to tell something to the viewers who are watching this interview right now, like any kind of golden rule, you can just tell them in order to make their English proficiency skills go to a higher level and to get themselves like a master, I mean, like a great master in English. So, what kind of a common golden rule you would like to tell to the people so that they can incorporate that into their daily life and they can make their English much better in their daily life, ma'am? Okay. I'll give a very general, so to say. I wouldn't want to say that it's a rule, it's an approach, it's a structured approach. कि public speaking जो है ना, when I say public speaking, I am basically talking in terms of English language, क्योंकि English language and communication is my forte, तो उसी के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगी। अब जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। एक ना स्टेज वाइज होता है, आप जो बोलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वो स्टेज वाइज होता है। तो पहले तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्राई टू अटेन प्रोफिशिएंसी ओवर इट। जैसे वी वर डिस्कसिंग की स्टफ लाइक ग्रामर एंड ऑल ना, तो उसको थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना है, LSRW इम्प्रूव करना है, तो वो ग्रेजुअली हो जाएगा। स्पीकिंग में अगर आपको फ्लुएंसी लाना है और पब्लिक स्पीकिंग के बात अगर हम करते हैं, तो 4 स्टेज में ना, सबसे पहला वाला जो स्टेज है, यू स्टार्ट speaking in front of a mirror. I think this is something very common. Most of us do it, most of us suggest it also. तो ये मैं बोलती हूँ फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। उसके बाद ना थोड़ा सा यू आर कंफर्टेबल, यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। थोड़ा सा रिकॉर्ड कीजिए अपने आप, ओके, मे बी इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। तो अपने आप को देखें कि हाउ यू साउंड, एंड व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। कि पहले तो यू आर जस्ट लुकिंग एट योरसेल्फ, वॉल्यूम उसका एकदम कम करके ना, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, या आपके हाव भाव कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आफ्टर दैट उसको पूरा आप देखिए मत, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ कि आप, बिकॉज बोलना, when I teach English, it is not just about the language, it is not just about grammar and the way, it is about prosody learning जिसे कहते हैं, as in your stress, your intonations, your rhythm, एंड जब हम न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं प्रोसोडी, तो वो उस बात को थोड़ा सा अहमियत मिलता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, मत देखिए, डोंट लुक एट द वीडियो, यू जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, हाउ डू यू साउंड, आपको वो अप्स एंड डाउन्स वो आ रहे हैं, स्ट्रेस एंड एम्फेसिस जो जिस वर्ड पे देना है वो आ रहा है नहीं, उसको भी मास्टर करना है। थर्ड में जो थर्ड स्टेज है, वंस यू हैव डन द मिरर थिंग एंड वंस यू हैव डन द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग थिंग, ट्राई टू हैव बिल्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और आपके गोल्स भी सिमिलर गोल्स हो, उनको सीखना है या स्टफ, तो उनके सामने एक ग्रुप बना के उनके साथ बात कीजिए, स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट स्मॉल ग्रुप, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। So once again, the problem is not the language most of the times. As I said, it's the fear of being judged. It's a fear, right, of speaking. So next is challenge yourself. And when I say challenge yourself, you need to go out there. अगर कंपनी में आप है, स्कूल में है, कॉलेज में है, जहां भी है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कुछ फंक्शन है, आपको स्पीच देना है या आपको प्रोग्राम एंकर करना है, टेक अ लीड, टेक अ लीड, है ना, चैलेंज योरसेल्फ। जब आप चैलेंज करेंगे ना अपने आप को, जो भी आपने बैरियर्स बनाए हुए हैं ना,
वो बैरियर्स को पार कर करके जाते रहेंगे. I used to be this huge introvert. I still am an introvert, but not when it comes to training and coaching. बहुत डर लगता था. But every time, I crossed one barrier, I told myself कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये करूं कि नहीं करूं, लेकिन हाँ मुझे करना है. I used to push myself. तो वो पुश जब आप करेंगे ना, जब आप जो भी चैलेंज है आपके माइंड में, उसको जब आप हटाएंगे, your focus will shape your reality. If you're focused towards improvement, you will definitely make it. All you have to do is you have to discipline your disappointment, जिसे कहते हैं. बहुत टाइम ऐसा होगा कि हम लोग नहीं सक्सेसफुल होते हैं किसी चीज में, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. Doesn't matter. Learn your lesson. Learn your lesson. As I said, success is not microwavable. Get rid of the fairy tales. Everything is going to be very easy. है ना? लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? सारे चैलेंजेस को रेजिलिएंटली मीट कीजिए एंड आगे बढ़िए. उसके बाद देखिएगा, इट इज नॉट दैट टफ. इट इज नॉट दैट टफ. स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ इजी लगने लगेगा. ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू डिसिप्लिन माय डिसअपॉइंटमेंट, चाहे जो भी हो. मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, डजंट मैटर. हंसेंगे थोड़ा सा, इट्स ओके. कल तो मैं आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन ना, कल तो मैं सीख जाऊंगी ये सारा चीज. तो वही स्टेप वाइज लेना है चीजों को, बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे, बिलीव मी, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. इसको इतना ऊपर का सोच के, उससे डर के कोई फायदा नहीं. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. आप जैसे आपने मदर टंग सीख लिया ना, उसको भी सीख लेंगे. थोड़ा सा फोकस चाहिए बस. लेट फोकस शेप योर रियलिटी. वे फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, बोला ना मैंने. तो इट वर्क्स लाइक दैट. Yeah, that was a great answer from you, ma'am, because as you told that if you wanted to make yourself professional in any kind of career, the first thing you have to do is speak to yourself. So you have to first recognize the flaws which you are doing right now. Like, okay, I'm going to be a great speaker in English. I'm going to perform in front of everyone, like around 1,000 people in the stage in front of the auditorium. Okay, what the first thing I have to do is speak first to myself in front of the mirror. And I should make myself sure that first I have some enough confidence that I can speak in English. The other thing is that you told very simple that you should not look at the mirror like what your facial expressions are. You should actually close your eyes and make sure that you speak in a clarity and in a very correct manner. So likewise, this is when you record yourself. Yeah, you should always record yourself so that you can always hear what you are trying to talk. Like if a person comes in front of the stage and if they're going to do any kind of mimicry, if they're going to mimic a person like a Bollywood star or a real life person, the only thing people always get excited is they're not going to look at the facial expressions what they're trying to tell. They're not looking to at the person, how this person is and what kind of structure they're not going to look at them. The only thing they're going to hear is they're going to close their eyes and they're going to visualize like, okay, this actual person who they're going to mimic is coming and performing in the stage. Likewise, in the same thing, they're not going to see you. They're going to actually listen to what kind of things that you're going to come and communicate with them. So it's better to forget that what they're going to judge by seeing you. The only thing they have to see is how you're going to speak. So that's the basic thing. As you told us to, that's actually a perfect advice that we should always make sure that we close our eyes and analyze what we are speaking so that we can always, okay, these are the stages that we are doing this kind of mistakes and we can eliminate these kind of mistakes at every stages in what we are speaking. And also at the same time you are telling like we should always frame a group of people, like we should always have bond with a group of people, like a minimum 2 or 3 people, maybe our friends or relatives or anyone who is very close to us, so that we'll be able to eliminate our fear. Like the basic thing as you told is eliminating fear is the basic thing for every work, not only in speaking in English language or anything, something like that. If we are able to eliminate the fear, the only thing, the result will come according to our capability. Like this is our full potential. Like we are going to speak to a group of people who are very close to us. We will be like, hey, just listen to my English language. How is it? Is it perfect or not?
then they'll be able to point out, okay, these are the things which you're good at, and these are the things which you can correct yourself. So that's a great golden rule which you told to us, ma'am. So once again, I'm very thankful to have your interview in our Woman Today's YouTube channel. I'm very humbled to have you in a Woman Today YouTube channel. So we had a lot of discussions about proficiency in English language, and also you are a multi-talented person. You are a news presenter, you are a sports enthusiast, you are a fitness trainer, and a lot of things are happening over here. And that was amazing for our viewers to have you in this YouTube channel, ma'am. So once again, thank you for having me. And if you wanted to tell any kind of message other than as an English trainer to this world, please communicate with the audience right now, ma'am. Firstly, Krishna, thank you so much. You really made me feel very special with all those, great words. But yes, as I told you, that I just happen to, love and enjoy everything that I do. So things are just happening, and there's a lot more to learn. No way can I claim that I'm perfect. I'm still learning. I'm still in that process. And every learner, I think, should feel the same way. Every moment, every second should be like a learning experience. So don't forget to upgrade yourself, right? And at the end of the day, if I can just tell you one thing, always remember that two things rather, right? The first thing that I want to share with you is that an inch of movement, right? We always think, ha, karenge, karenge, karenge. Like an inch of movement will take you closer to your goals than miles of intention. इंटेंशन सही है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं बनेगा सर. यू रियली हैव टू टेक एक्शन, है ना? सो एन इंच ऑफ मूवमेंट इज मच मच ग्रेटर, मोर सिग्निफिकेंट देन अ माइल ऑफ intention, right? And again, if you really want to do something ना, I mean, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम लोग एडल्ट लर्नर्स का मैं बोल रही हूँ कि हम लोग हमेशा भी हैव दैट एक्सक्यूज कि मैम टाइम नहीं था, बिकॉज आई गिव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड स्टाफ ना, क्योंकि उसको हैंड्स ऑन सीखना है, आप पढ़ पढ़ के नहीं सीख पाएंगे उसको, तो मैम टाइम नहीं मिला. तो माई टेक ऑन दिस इज दैट आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स, time is at the end of the day is just 24 hours, right? So look at the point that I want to make here is that if you really want it now, you will find a way. If you really, really want it, you will find a way. And if not, you will find an excuse, right? So what is it? You want to find a way, or you want to find an excuse? And it is all fun, if you can make it fun, and if you do not take life too seriously. I mean, chill. Life is giving you so many opportunities to learn so many things. Use that opportunity and have fun in the way. तब ना आपको ये burden नहीं लगेगा. I just want everybody to enjoy learning the language, whether it is English or anything else that you want to learn, है ना? तो वो process को enjoy करना सीखिए. तो एक बार आप enjoy कर लेंगे ना, तो अरे इतना difficult कुछ भी नहीं है life. I have, as I said, experience with different different languages सीखा है. इतना difficult नहीं है. Just वो process आना चाहिए, structured approach सही रहना चाहिए, and everything will be fun. So I'm sure all of you are great people, and everybody is going to do a great job of whatever they want to do in life. Yeah, that's a great answer from you, ma'am. Because if anybody wants something, they have to work for it. They have to go for it. If they don't want it, they should sit simply for it. And the other thing I wanted to add on it is simple, ma'am. If anybody wants to have something in their life, they should work on it. They will be always like, is it going to work or not? No need to worry about that. If you want to have it, work on it. The universe is always ready to help you. It will put some kind of situations which will help you in achieving your goals. That's a great answer from you, ma'am. And once again, thank you for accepting this interview invitation, coming to this wonderful woman. The privilege is mine, Krishna. Absolutely mine. It was great talking to you. Yeah. And I just hope we get to talk more in future. Yeah, okay. So people who are watching this video, please click on the subscribe button. If you have any kind of doubts regarding this interview, you can just comment in the comment section. Sangeeta ma'am is happy to help you out by commenting to you in a comment section. So it was a wonderful interview, ma'am. So good evening. Thank you.
This is your host, Krishna over here, and today our guest is youth representative, fitness enthusiast, English trainer, and what more? A multilingual, a multi-professional ma'am over here. So once again, thank you for coming to this interview. Good evening, ma'am. Thank you, Krishna. See you soon. Bye. See you soon, ma'am. Bye.